Welcome student in second session from your textbook chapter number 8 motion. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the introduction of motion, types of motion and scalar and vector physical quantities. Okay, so today we are going to discuss about the distance travel and displacement. So distance, it can be defined as total path covered by body in any direction. Okay, means body jitna path cover karti hai, okay, in any direction, okay, no matter that. So that is called the distance. So it is a scalar quantity, and you know that in scalar quantity only magnitude is there. Formula that distance is equal to total path travel. So that is called the distance. And what is the unit of distance? Smallest unit is meter and bigger unit is kilometer. Okay. And what are the characteristic of distance? It can never be zero. Second, if a body travels different path, then total distance is calculated by simply adding the magnitude of all the path. Means अगर different path travel means different path अगर travel करती है, cover करती है, तो उन सभी path के distance को जितने भी मीन्स मैग्नीट्यूड है उसके उन सबको ऐड करते हैं सिंपली, एंड देन वी गॉट द एक्चुअल डिस्टेंस. नाउ अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. सो व्हेन ए बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, मतलब एक पोजीशन, सपोज हियर इज ए पोजीशन एंड देयर विल बी बी पोजीशन. सो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाती है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. सो व्हेन ए बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, okay, the shortest distance between the initial position and final position. अब means initial position क्या होती है? From where they start. Okay, and final position means from where they reach. So that is called the final position of the body. Along with direction, और इसमें direction भी mention करनी पड़ती है. Okay, means जैसे 4 किलोमीटर we go to east, then south, 2 किलोमीटर like that. Okay, so is known as its displacement. Clear this one? It means that जिसमें magnitude भी होता है as well as direction भी mention रहती है. So that is called the displacement, and it is represented as S. S means what? Distance also represented by S, and displacement represented by S by putting this arrow above the S. Clear this one? So it is a vector quantity. Why it is vector quantity? Because it has magnitude as well as direction. And what are the characteristic of this displacement? It can be zero. आपने डिस्टेंस में देखा था, इट कैन नेवर बी जीरो, में डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, बट इन दैट डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी जीरो, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इट इज अ शॉर्टेस्ट रूट. ये कैसा रूट है? शॉर्टेस्ट रूट है. ओके ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल अबाउट द डिस्टेंस. इन दिस केस द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मेन इज 5 किलोमीटर. ओके, प्लस 3 किलोमीटर. So the distance traveled by the main is what? 8 kilometer, because it start from the A and reach to the C. Okay, so this is what? Distance. No matter in which direction. So only means covered the how much distance. Okay, so just simply add the magnitude and we got the total distance, means 8 kilometer. Clear this one? Now about the example of displacement. The shortest distance between the initial position A and the final position C of the main is 4 kilometer. कितना mention है? 4 kilometer. So the displacement of main is 4 kilometer in the east direction. Clear this one? So this is what? 4 kilometer towards the east. This is. Now take one example. A main travels a distance of 1.5 meter towards east, then 2.0 meter towards south, and finally 4.5 meter towards east. Clear this one? So this is the question. Now what we have to find out, what is the total distance covered. Okay, means इसमें आप फर्स्ट आपको फाइंड करना है what is the total distance travel, means उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. सेकेंड, what is his resultant displacement, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है. So now look, a main travels a distance of 1.5 meter towards east, then 2.0 meter towards south. means देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन से मेंशन है. ओके, means A से B पे है, B से C पे आ गया. ओके, then फाइनली 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मीन्स दैट डी पे पहुंच गया. ओके, सो मीन्स ये टोटल जितने भी मेंशन है, आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन पता है, मीन्स वी नो मैटर इन विच डायरेक्शन वी हैव टू जस्ट एड द मैग्नीट्यूड. सो 1.5 प्लस 2.0 प्लस 4.5, दिस इज व्हाट? 8.0.
मीन्स ये क्या हो गया 8 मीटर उसने डिस्टेंस टोटल कवर्ड किया. तो दिस इज द फर्स्ट आंसर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट मैन 8 मीटर. नाउ सेकेंड, व्हाट इज हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? So the resulted displacement can be found by joining the starting point. अभी आपने पीछे देखा था, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से उसको ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ दैट स्केल. ओके, वी हैव टू ज्वाइन एंड ओके विद द फिनिशिंग पॉइंट डी. अब उसका ए स्टार्टिंग पॉइंट है, फिनिशिंग पॉइंट डी है. तो यहाँ से सिंपली आपको लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, लाइन एडी रिप्रेजेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेन. अब ये ए और डी, ये क्या हो गया उसका shortest distance, means that displacement distance. Okay, we got that it is found to be 6.3 centimeter. फिर जब आप उसको मेजर करेंगे स्केल से, then we got that 6.3 मीटर. So and स्केल जो रहती है उसको आपने कंसिडर करना है that 1 centimeter is equal to 1 meter. Okay, we have to consider, so that's why 1 centimeter is to 1 meter. So here 6.3 centimeter means what? 6.3 meter. Clear this one? So the final displacement as represented by AD is 6.3 meter. So whenever a body travels along a zigzag path, अब देखो ये ऐसा zigzag path था. Okay, so whenever a body travels along a zigzag path, the final displacement is obtained by joining the starting point. इस कभी भी आपको ऐसा zigzag path covered करना है, उसका displacement find करना है, तो आपको initial point को final point से add करना है. Okay, so joining the starting point and finishing point of the body by a straight line, then we will easily get the displacement. Clear this one? Now next is uniform and non-uniform motion. Okay, so uniform motion, a body has a uniform motion if it travel equal distance in equal interval of time. Here is the distance time graph. Okay, for a body having a uniform motion in a straight line. So फिर जब आप इसमें करते हो तो स्ट्रेट लाइन शो करती है कि कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन हो रहा है. ओके, सो दैट फॉर एग्जांपल कार रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड दैट 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो दैट विल कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स एवरी सेकेंड. सो इट्स मोशन विल बी यूनिफॉर्म. क्लियर दिस वन? कार रनिंग, जैसे यहाँ पे कार रनिंग करी एट द कांस्टेंट स्पीड. ओके, मीन्स दैट 10 मीटर पर सेकेंड मीन्स 10 मीटर वो पर सेकेंड में कवर कर रही है. ओके, सो विल कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एवरी सेकेंड, सो इट्स मोशन विल बी यूनिफॉर्म. क्लियर दिस वन? सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन. नाउ नेक्स्ट वन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस अनइक्वल कवर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. सो व्हेन ए बॉडी कवर्स unequal distance in a equal interval of time, so that is called the non-uniform motion. For example, a freely falling body, for example a ball. Okay, ball dropped from the roof of a tall building travel unequal distance in equal interval of time, so it has a non-uniform motion. Okay, so look here, this is the distance time graph. So if distance time graph is curved, you know, curved line. Okay, so curved line, the motion will be non-uniform. The motion of train starting from the railway station is also known as example of non-uniform motion. This is because when the train starts from a station, it moves a very small distance in the first second. The train moves a little more distance in the second. Okay, and so on. And when the train approaches the next station, the distance traveled by it per second decreases. So that the distance time graph for a body having a non-uniform motion is a curved line. Okay, in order to find out whether a body has uniform motion, non-uniform motion, so we should draw the distance time graph for it. Clear this one? So if the distance time graph is a straight line, look here, if we got the straight line, okay, then the motion will be what? Uniform. And if the distance time graph is a curved line, then the motion will be non-uniform. It should be noted that non-uniform motion is also called as accelerated motion. Clear?